Hey guys, this is Sunitha and I welcome all of you on my YouTube channel English Guru. So, let us start the class. This is class 5 and we are going to learn our English. So, before starting the class, as you know what is the usual step to start the class, we need to revise our all the three rules, three mantras to learn English. Of course, yes. Our first mantra is I can learn English and I will. Yes, you have to speak it with me. I can learn English and I will. Second mantra, the more you listen, the perfect you will be. The better speaker you will be. The more you listen, the better speaker you will be. And the third mantra is practice is the key of success. Of course, so with all these three mantras, let us start the video without any delay. Let us start the class. So here is your vocabulary portion. Let us start our vocabulary. Can you see? सर्दियों में हमें इसका बहुत यूज़ होता है, तो इसे हम अंगीठी कहते हैं. तो व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? Actually, in English, we call it hearth. 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 Next, this is, in Hindi we call it agarbatti, but in English we call it incense stick. Incense stick. Next is, this is very common during the winter season. Of course, in Hindi we call it kambal, and in English this is blanket. Blanket. बहुत यूज़ होता है हमारा घर में. जब भी हमें बाल संवारने होते हैं तो हम इन्हीं का यूज़ करते हैं. So what do we call it? There are so many, that's why I'm writing here the plural one. These are combs. Here we have to mind it that this B will be silent. The right pronunciation of this word is combs. Will not pronounce B. This is a jar or a pitcher. Pitcher. You might have heard the story of the thirsty crow. There the pitcher is often used. So this is a jar or a pitcher. Glass. हिंदी में हम इसे ग्लास कहते हैं, तो इंग्लिश में हम इसे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? ग्लास. एक्चुअली ग्लास भी इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है, बट एक्चुअली इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड है, दैट इज टम्बलर. Tumbler. This is a pot. This is a pot. This one is earthen pot. This one is earthen pot. जो हमारी हांडी होती है उसको हम इंग्लिश में earthen pot कहते हैं. मिट्टी से बना हुआ जो पॉट होता है उसको हम earthen pot कहते हैं. This is also called a pot. बोरी. बोरी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? This is sack. Sack. Now, what do we call it? This is a reed stool. हिंदी में हम इसे मूढ़ा या मोहरा बोलते हैं. So, in English we call it reed stool. एंड हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है. जो हमारी बैठक वगैरह हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. These are mats. Two mats have been shown here. So mats. This is stove. This is stove. Now, these are broomsticks. Broom sticks. These are broomsticks. This is swing. Swing means jhula. This is a bucket. This is a bucket.
दिस इज लिड. जो ढक्कन होता है हमारा उसको हम बोलते हैं लिड. दिस इज अ बैलेंस. तराजू. तराजू को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस. दिस इज अ बैलेंस. दिस इज अ मैच बॉक्स. मैच बॉक्स. जो माचिस होती है, माचिस को इंग्लिश में बोलते हैं मैच बॉक्स. नाउ these are earthen lamps. Earthen lamps. Earthen lamps. This is a doormat. Door mat. This is combined. Now this is a palki. This is a palki. This is a cradle. जो पालना हमारा होता है उसको हम बोलते हैं cradle. Now this is a cup and this is a saucer. 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 This is a cup and this is a saucer. This is a flower vase. Flower vase. This is a flower vase. This one is flower vase and these are flowers. These are boxes. घर में हमारे जो संदूक होती है ना उसको भी हम क्या बोलते हैं? बॉक्सेस बोलते हैं. And here, see, this is a candle. This is a candle and this is a wick. W-I-C-K. Wick. This is a wick. So enough for the today and we'll meet in the next vocabulary portion. So after your vocabulary portion, let us move towards the second part of the class and this is time for the conversation. So here is your conversation. Vartika, is this Vartika, isn't it? Well, Sunita, fancy meeting you here. Small world, isn't it? Yes. What are you doing here? On business? I'm on holiday with my family. By the way, how is your business going on? Well, the business is quite fine. In fact, more than that. What about the sale of your new book? It is selling like hotcakes. Congratulations. Thank you. Well, it's time for the theatre show for which I've booked 3 tickets. Would you like to join us? Oh no, thank you for the invitation, but I need to go. There is an urgent meeting. We will meet later. Yeah, sure. Goodbye. Goodbye. After the conversation part, let us move towards the sentences which are used on daily basis. So we have some sentences which are used on daily basis and you should know what do we call it in English. So here are some sentences which are very important. So this is very important part of our class. So watch the video. So here are some common used sentences. Your first sentence is तुम्हें चोट कैसे लगी? How did you get hurt? How did you get hurt? मुझे यकीन है. I am sure. Please practice it with me. Practice it with me. Remember the third mantra. Practice. Practice is the key of success. So मुझे यकीन है. I am sure. क्या तुम्हें यकीन है? So here this is an interrogative sentence. So the helping verb, it will come before the subject. So are you sure? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. So this is past. So I did nothing of the sort. I did nothing of the sort. ऐसा कुछ करने को मतलब of the sort. मैं बहाने नहीं बनाता. So मैं बहाने नहीं बनाता. So I don't make excuses. I don't make excuses.
बहाने मत बनाओ. Here this is an imperative sentence. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. Don't make excuses. आपसे बहस करना बेकार है. आपसे बहस करना बेकार है. It's useless to argue with you. It's useless to argue with you. तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम्हें ये कहाँ से मिला? Where did you get it from? Where did you get it from? Usually हम इन sentences को from where did you get it बोल देते हैं, but from पहले नहीं आएगा. From कहाँ आएगा? वो लास्ट में, ये जो प्रपोजिशन है from, ये लास्ट में आएगी. Like what are you waiting for? So where did you get it from? So from लास्ट में आएगी. Please pay attention towards it. तुम्हारा तो जवाब नहीं. तुम्हारा तो जवाब नहीं. ये सेंटेंस हम बहुत यूजुअली स्पीक करते हैं, बहुत यूजुअली हम बोलते हैं. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैव नो मैच. यू हैव नो मैच. वो बुरा मान गई. वो बुरा मान गई. शी गॉट ऑफेंडेड. जब हम ये कहते हैं कि वो सामने वाला कोई और बुरा मान गया, तो हम एक वर्ड यूज़ करें ऑफेंडेड. लेकिन जब अगर मैं कहूँ कि मैं बुरा मान गई, तो मैं क्या बोलूँगी? आई गॉट अनॉयड. सो दूसरों के नाराज़ होने के लिए हम ऑफेंडेड यूज़ करेंगे, और खुद के नाराज़ होने के लिए हम अनॉयड. दिस इज अनॉयड. खुद के नाराज़ होने के लिए हम अनॉयड यूज़ करेंगे. सो शी गॉट ऑफेंडेड. वो बुरा मान गई. ज़्यादा हवा में मत उड़ो. ज़्यादा हवा में मत उड़ो. ये सेंटेंस हम बोलते हैं जब भी कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को बूस्ट करता है, शेखियाँ बखारने लगता है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा हवा में मत उड़ो. सो डोंट पुट ऑन एयर्स. Don't put on airs. मुझे हल्का बुखार है. हल्का means mild. So I have a mild fever. I have a mild fever. ज़्यादा नौटंकी मत करो. ज़्यादा नौटंकी मत करो. Don't gimmick too much. नौटंकी मतलब gimmick. ज़्यादा नौटंकी मत करो. Don't gimmick too much. क्यों नहीं? Why not? क्यों नहीं? Why not? आप बहुत देर लगा रहे हैं. आप बहुत देर लगा रहे हैं. You are taking too long. You are taking too long. Come on, practice it with me. You are taking too long. ये पाप है. ये पाप है. It's a sin. Sin means पाप. लोग ऐसे क्यों होते हैं? Why are people like this? Why are people like this? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? Why do you think so? Why do you think so? ऐसा नहीं है. It's not like that. This is a very common sentence. ऐसा नहीं है. It's not like that. दूध फट गया. दूध फट गया. The milk turned sour. The milk turned sour. ज़्यादा भाव मत खाओ. ज़्यादा भाव मत खाओ. Don't act pricey. Don't act pricey. ज़्यादा मत खाओ. Don't overeat. ज़्यादा खाना मतलब overeat करना. तो ज़्यादा मत खाओ मतलब don't overeat. मेरा पेट खराब है. My stomach is upset. मेरा पेट खराब है. My stomach is upset. अभी के अभी इसे करो. Do it right now. Do it right now. उसकी चमचागिरी मत करो. उसकी चमचागिरी मत करो. Don't be a puppet of him. Puppet मतलब कठपुतली होता है. किसी के हाथ की कठपुतली होना, तो किसी की चमचागिरी करना, किसी की हर बात मानना. So don't be a puppet of him. So hey guys, that's all for the day, and we'll meet in the next class. Till then, remember all the 3 mantras and keep practicing. Keep practicing with your family members, with your friends, with your colleagues, wherever you can practice for English. Just practice it, and surely after 21 days you are going to be a fluent speaker of English. Till then, bye.